So this is your PNA manual will have this format, your name of ship, IMO number, port of registry, stamp of your administration. So it'll identify the arrangement and equipment required for compliance of Annex 2. So this manual has to be approved by administration, and you cannot make an alteration without approval of your flag state. So here you will have the features of MARPOL Annex 2, description of ship's equipment, unloading procedure, tank stripping, and the procedure how to clean that cargo, discharge of residues, ballasting, deballasting. All will be given in your PNA manual. That is your discharge criteria, which you have done. What equipments you have for pumping. So you will have your description of cargo tanks and position, diagrams of general arrangement plan, numbering of cargo tanks, heating arrangements, cargo piping arrangements with diameters and pump capacities, stripping system, diameter, location of suction points of cargo lines and stripping lines. And if you have a bilge well or suction well, the cubic capacity should be mentioned in that PNA manual. Line draining and stripping of blowing arrangements, quantity and pressure of nitrogen air required for line blowing. That will be there. Plus, you will have general arrangement for segregated ballast tank, piping arrangement for ballast tank, pumping capacity for those tanks which are also used for ballast tanks, interconnection between ballast and underwater outlet. Plus, which are your dedicated slop tanks and the capacity and piping and underwater discharge. Plus, your description of your underwater discharge, where it is located, what are the connections, location for seawater intake. Then your ventilation system, uh, is your noxious liquid substance ship is certified to carry vapor pressure or how much? Ventilation piping and fans, diameter, position of ventilation openings, minimum flow rate, location of structures, method of ventilation, means of ensure tank is dry. Then for your tank cleaning, number of tank cleaning machines, capacity, how much you can operate, what pressure will be there, what is the maximum temperature it can operate. Then your stripping procedures, unloading procedures. This is a stripping, cargo temperature maintenance. When you cannot unload, so if you have a failure of stripping system or a failure of heating system, that will be the procedure will be there. So all these procedure of cleaning, that will be there for your various category of substance. And then your information about your flow diagram, pre-wash procedures, ventilation procedures, they'll all be given like this. Stripping capacity, flow diagrams, how your tank cleaning to be done. This is your stripping requirements which we are done. So 350 was 300 plus tolerance of 50. 950 was 900 plus tolerance of 50. We've already done this. This is the cleaning disposal method, taking required there, pre-wash procedures, ventilation procedures. So that is all your PNA manual. So I'll be sending you the notes for these. Now we do your SMPP. SMPP basically is your shipboard marine pollution emergency plan. So in case you have SOPEP and you're an oil tanker, then you don't require SOPEP, you'll have shipboard marine pollution emergency plan. So you'll have a ship ID number, then you will have reporting procedures, whom to report, port contacts, coastal contacts, probable discharge, what to do in case of spill, pipeline leakage, tank overflow, hull leakage,
or when you are grounding, how you prevent fire, extension of hull damage, fire explosion, collision, hull failure, excessive blast, ship submerged, loss of tank environmental control, danger reaction of cargo. All this will be mentioned as SMPP. What are your actions? How you control it? How you transfer bunker and lightning it, the vessel? What are the damage stability calculations, hull stress calculations, responsibility of your master and crew members? What are the duties? That'll be there. So these are mandatory. So you can't alter these. Section A, you can't alter. So non-mandatory, this will be national and local coordination, that is mandatory. Non-mandatory will be this part, which is appendix, port contacts, ship interest contacts, coastal state, initial notification. This is voluntary part. So I'll be sending you, you can just read, you don't have to read in detail, just the headings. So this is how your SMPP is working, actions required, reporting, navigation measures, seamanship measures, steps to initiate external response, how you report. तो ये ओरल के लिए इतना काम आएगा, ये थ्योरी में इतना नहीं चाहिए. थ्योरी में तो जस्ट 1 पेज है, बस उतना ही लिखना है. You don't have to write entire. But just for your knowledge, I'll be sending everything to you. क्योंकि ये जो चीज है, पाइपलाइन लीकेज एंड ऑल, दिस कम्स इन योर कंटीजेंसी प्लान. इसको पढ़ लेना. टैंक ओवरफ्लो कैसे क्या करेंगे, हल लीकेज होगा तो क्या करेंगे, व्हाट इज कंटीजेंसी प्लान, एंड क्या स्पिल होगा मशीनरी स्पेस में तो क्या करोगे, ग्राउंडिंग होगा तो क्या करोगे. सो ये सारी चीज आप पढ़ लो, क्योंकि कई बार कंटीजेंसी प्लान आता है सेफ्टी का, तो आपको कराऊंगा, तो उसमें ये सब लिखना है. लिस्ट हो गया, डेंजरस कार्गो रिएक्शन हो गया, ऑल दिस इज देयर. तो आपकी एक्शंस आपको पता होने चाहिए क्या करना. SMPP वी हैव डन. और कुछ है तो देखते हैं. सो PNA मैनुअल वी हैव डन, सो वी हैव डन एवरीथिंग हियर. अब हम NX3 पे आते हैं. NX3 काफी छोटा है, NX3 में ज्यादा कुछ नहीं है. NX3 is basically for container vessels which are carrying dangerous goods in package form. That is your NX3. तो जैसे आपने IMDG में पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे इन कार्गो वर्क, तो NX3 बेसिकली जो IMDG में जो है वो चीज NX3 में है. So this NX entered in force on 1st July 92 and that is for harmful substances in package form. जैसे कि कॉस्टिक सोडा हम बल्क में कैरी कर रहे हैं, तो अल्कली है, तो टैंकर में पूरा कैरी कर रहे हैं, तो वो NX2 में आएगा. लेकिन अगर हमने कॉस्टिक सोडा ड्रम में लोड किया इन कंटेनर,
वो NX3 में और वो IMDJ के थ्रू आएगा. So NX3 sets the requirement regulation for prevention of pollution by harmful substances in package form. और इसमें रिक्वायरमेंट होता है कि डिटेल स्टैंडर्ड्स ऑफ पैकिंग, आपकी कैसे पैकिंग होगी, तो IMDG की डिटेल इसमें आ जाएगी. मार्किंग कैसे करोगे, लेबलिंग कैसे करोगे, क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, स्टोरेज कैसे करोगे, क्वांटिटी कम कैसे करोगे, लिमिटेशन क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, और प्रिवेंटिंग पोल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो इन दिस एनेक्स यू डोंट हैव अ स्पेशल एरिया, इसमें कोई स्पेशल एरिया नहीं है. So that is NX3, prevention of pollution of by harmful substances in package form. कंटेनर पानी में गिर गया तो ये NX3 में आएगा. So for this purpose, empty receptacles जो खाली टैंक्स हैं, freight containers, portable road and rail wagons जिनको हमने भी सफा नहीं किया है, and they have been used for carriage of harmful substances are treated as harmful substances unless precautions have been taken to ensure that they do not contain residue which is hazardous to marine environment. तो अगर उनको साफ कर दिया, they are clean, so they are not considered as harmful then. Otherwise, they'll be considered as harmful. So packaging, containers and tanks have to be adequate to minimize your hazard to the marine environment. So the requirements for marking, labeling, freight containers and tanks will be in this as per IMDG. So in packages में आपको करेक्ट टेक्निकल नेम डालना है. तो इसमें कोई ट्रेड नेम नहीं चलेगा, लाइक कॉस्टिक सोडा लाई. तो अब ऐसे ये सारी चीजें जो है वो करेक्ट केमिकल नेम आएगा या टेक्निकल नेम आएगा. सो दे शुड बी ड्यूरेबली मार्क्ड सो दैट पानी में भी चला जाए तो वो लेबल ना मिटे. Labeled to indicate that this substance is marine pollutant, समुद्र में pollution करेगा, and your identification should be mentioned with use of relevant UN number. जो आपने IMDG में पढ़ना है या पढ़ लिया क्या? IMDG पढ़ा है कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं सर, नहीं पढ़ा. उसमें पूरी डिटेल आएगी. IMDG में करोगे ना, वो अलग से आपका टॉपिक है, क्योंकि NX3 से अभी तक कोई पेपर नहीं आया है, क्योंकि ज्यादातर इसको IMDG में डाल देते हैं. तो इसके लिए वो NX3 के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, क्योंकि सारा टॉपिक तो आपका IMDG में आ जाता है. सो इसको UN नंबर दिया जाता है, करेक्ट टेक्निकल नेम एंड UN नंबर दिया जाता है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली लोकेट के ये क्या केमिकल. अब इसकी जो मार्किंग है उसको ऐसा फिक्स करते हैं और लेबल ऐसा होता है कि 3 महीने इमर्स किया सी में, इट कैन बी आइडेंटिफाइड. तो कंटेनर पानी में गिर गया, डाइवर गया देखने के लिए, उसको पता ही नहीं है, उसने खोल दिया नीचे और वहां एक्सप्लोजन हो गया. बिकॉज लेबल आपका 3 महीना सबमर्जन को सस्टेन करना है, इमर्शन को सी में. तो दैट इज द रीजन, सो दैट योर डाइवर्स कैन आइडेंटिफाई उसमें है क्या. So it should be suitably marked and labeled and shall be taken off by durability of the material used at the surface of packaging. अब बहुत छोटी डब्बे हैं जो बाई एयर लेके आ रहे हैं, as per IMDG, those are small quantities of harmful substance. उनमें मार्किंग रिक्वायरमेंट्स की एग्जेम्पशन हो सकती है, क्योंकि मार्किंग की जगह ही नहीं, मार्किंग कर ही नहीं सकते. अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती कैरेज के लिए, तो यू हैव टू हैव द करेक्ट टेक्निकल नेम ऑफ ईच सब्सटेंस, प्लस उसके ऊपर पैकेज के ऊपर लिखना चाहिए मरीन पोल्यूटेंट, ये इसकी मार्किंग होगी. डॉक्यूमेंट्स वो शिपर देगा और शिपर उस डॉक्यूमेंट के साथ एक साइन डिक्लेरेशन देगा कि द शिपमेंट इज प्रॉपर्ली पैकेज, मार्क्ड, लेबल्ड, प्लेकार्डेड. मतलब उसमें जो बड़ा सा जो प्लेकार्ड लगा है वो अप्रोप्रिएट है टू द
NX3 and it is in proper condition for carriage so that आपके मरीन एनवायरनमेंट में हजार्ड कम हो। तो ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आपने प्रॉपरली पैकेज किया, मार्क किया, लेबल किया, ले कार्ड लगाया, so that हजार्ड मरीन एनवायरनमेंट में मिनिमाइज करे। प्लस क्या होगा, जो भी शिप कैरी करता है हार्मफुल सब्सटेंस उसके लिए स्पेशल लिस्ट होती है या कार्गो मैनिफेस्ट होता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि IMDG कार्गो है। सो उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ये तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल भी पकड़ लेगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया IMDG कार्गो और आपके जहाज पे है तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल आपको पकड़ के रख सकता है कि जब तक आप ठीक नहीं करो। सो ईच शिप शुड हैव these substances in a special list or manifest stating that कि कहाँ पे आपने ये कार्गो रखा है, किस होल्ड में रखा है, किस लेवल पे रखा है। प्लस आपका डिटेल स्टोरेज प्लान होना चाहिए टू लोकेट द हार्मफुल सब्सटेंस which can be used in place of special list और मैनिफेस्ट। तो अगर आपने स्पेशल लिस्ट और मैनिफेस्ट नहीं दिया तो एक डिटेल स्टोरेज प्लान दे दो कि भाई आपने कहाँ रखा है। प्लस ये कॉपीज ओनर के पास होंगी जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होता और हिज रिप्रेजेंटेटिव अनलेस दिस कार्गो हैज बीन डिस्चार्ज। प्लस इसकी कॉपी पोर्ट स्टेट कंट्रोल के पास भी होगी और अगर उसको नहीं दी तो वो आके आपका क्लियर ग्राउंड दे देगा डिटेल इंस्पेक्शन के लिए और जहाज को होल्ड कर देगा। तो कॉपी उसकी देनी पड़ेगी मैनिफेस्ट की या डिटेल स्टोरेज प्लान की पोर्ट स्टेट कंट्रोल को भी। सो अगर ship is carrying your special list or manifest or detailed storage plan तो उसमें the documents required for this regulation may be combined with IMDG जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। बट जब कंबाइन करें तो उसमें डिस्टिंग्विशन होनी चाहिए कि व्हाट इज डेंजरस गुड्स, व्हाट इज हार्मफुल गुड्स, कौन सा मरीन पोल्यूटेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो डेंजरस गुड इज नॉट अ मरीन पोल्यूटेंट। तो दोनों की अलग अलग मार्किंग होनी चाहिए कि वो डेंजरस गुड है, हार्मफुल सब्सटेंस है, मरीन पोल्यूटेंट है या नहीं है। Now, certain harmful substances may sound scientific and technical reasons and need to be prohibited for carriage, और या तो उनकी क्वांटिटी को लिमिट करना चाहिए। So, in limiting the quantity, उसकी साइज, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, पैकेजिंग, वैल्यू, सपोज टेम्परेचर कंट्रोल में ले जा रहे हैं तो वो सब कुछ होनी चाहिए एज पर NX3। अब कई बार होता है एक्सेप्शन हो सकता है कि वो हर मार्पोल में एक्सेप्शन है। तो आप जहाज को बचाना है या सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है तो आप उस टाइम वो कप्तान उनको जेटिसन मतलब फेंक सकता है कार्गो को। अगर वो बचाना हो तो शिप डूब रहा है, अब उसमें कार्गो फेंकना है तो यू कैन जेटसन, ये मास्टर की is allowed, but he has to mention in your official logbook that he is jetsoning. Subject to provisions of present convention, appropriate measures based on physical, chemical and biological agents, properties of harmful substances. तो कई क्या बात है, कोरोना वायरस का वैक्सीन ले जा रहा है, उसमें वो लिमिटेड क्वांटिटीज में लेके जा रहा है। अब उसमें वैक्सीन में तो वायरस है तो उसकी अकॉर्डिंगली ये देखना है कि कहीं वो टूट ना जाए, वो वायरस कहीं लीक ना हो जाए पानी में या शिप में, जिसके कारण बाकी अफेक्ट हो जाए। ये ध्यान रखें कि इनसे आप दूसरों को अफेक्ट ना करें, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल एजेंट भी जाएंगे तो उसको कैसे लेके जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, एप्लीकेशन, पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज, क्वांटिटी लिमिटेशन, एक्सेप्शन क्या है, पोर्ट स्टेट कंट्रोल कैसे चेक करेगा, मरीन पोल्यूटेंट का डिक्लेरेशन। तो इसमें न्यू शिप होगा एज पर NX3, एनी शिप विच हैज बीन बिल्ट on or after 27 September 2003. Harmful substances are
मरीन पोल्यूटेंट्स एज पर आईएमडीजी कोड, तो आईएमडीजी कोड इसमें आएगा। अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे एनएक्स 2 एंड एनएक्स 3 पे वीडियो। Hello friends, I have received an overwhelming response from all of you for videos of MARPOL Annex 1 and Annex 2 and a lot of requests to upload other annexes as well. In this video, we are going to discuss about Annex 3 of MARPOL. So, let's get started. MARPOL Annex 3 is the regulation for the prevention of pollution by harmful substances carried in packaged form. Annex 3 entered into force on 1st of July 1992 and the revised Annex 3 entered into force in October 2010. First of all, let us understand to which all ships Annex 3 applies to. The Annex applies to all ships carrying harmful substances in any kind of packaging, in containers, in portable tanks. Portable tanks are tanks which can be moved from one place to another. Road tanks or trucks, which you can see here, and rail tank wagons, which look like this. Now, the question that arises is, what is a harmful substance? Harmful substances are those substances which are identified as marine pollutants in the IMDG code. IMDG code is the International Maritime Dangerous Goods Code. For those of you who don't know about the IMDG code, it is a set of 3 books which has to be carried and complied at all times when a vessel is carrying dangerous goods in packaged form. So it basically contains a set of guidelines and instructions and regulations to facilitate the free and restricted movement of dangerous goods and protection of the marine environment. As I told you, the IMDG code comprises of 3 books: Volume 1, Volume 2, and the supplement. Volume 1 of the IMDG code contains general provisions, classifications of dangerous goods, and guidelines packing, marking, and transporting dangerous goods, while Volume 2 contains the dangerous goods list. It is a list of dangerous goods carried by sea, and whenever a letter Papa is given against a substance in the DG list, it means that substance is a pollutant. This is the goods list which is given in volume 2 of the IMDG code. Let's take an example to make you understand even better. As you can see this column and wherever P that marine pollutant. So have a look at this substance. This substance is acetylene. There is a dash against this substance. This means that this substance is not a marine pollutant. Now, P is given this substance means that ammonia is a marine pollutant. वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है Oxide, butane, not marine pollutant. So this is in volume 1 of the IMDG code, marine pollutants defined as substances which are subject to the provisions of Annex 3 of MARPOL amended, and this is the marking which is used for marine pollutant. If you want to know more about the IMDG code, click the link in the description below. Watch the video. The regulations of 3 were developed in order to identify the marine pollutants and transport them in such a way to minimize the pollution and also distinguish between cargoes which are marine pollutants and which are less harmful. Next is the discharge criteria. As per Annex 3, the rules on discharging harmful goods are straightforward. It is absolutely prohibited to discharge harmful substances into the sea, except where there is a grave or imminent danger to the vessel or life of a person. Now let's have a look at the requirements of Annex 3. The Annex states that appropriate measures based on the physical, chemical, and biological properties of harmful substances shall be taken to regulate the washing of leakages overboard, provided that compliance with such measures would not impair the safety of the ship and persons on it. So this means that sufficient steps need to be taken based on the properties of a harmful substance to prevent its discharge into the sea. The next
require detailed standards on packaging, marking, presentation, storage of the for minimizing by harmful substances. The guidelines on all of the above are given in the IMDG code.